Yes, hello. Hi everyone, am I audible to all? Say yes or no. Am I visible and audible to all? Gurmeet seems to be more excited now. जसकीरत को आगे बुला लो, जसलीन मैम. इतने कुर्सी ला के थोड़ी देर बैठे, अपनी कुर्सी बाहर ले आओ क्योंकि बार बार बुलाना पैंदा. जब टास्क स्टार्ट होगा ना. Okay, concentrate on the board everyone, and this is the statement for today. Note down this statement and try to write down all the synonyms on the statement itself. Questions are, do you agree or disagree? What criteria should be used to decide how much people should be paid? Note down the statement and try to understand it before we begin. ये पॉज है. ਉਹਦੀ ਸਟਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੌਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਂਦੀ. Yes, noted down the statement everyone. Shall we begin? Okay. So the task for today is, some people feel that certain workers like nurses, doctors and teachers are undervalued and should be paid more, especially when sums of money that are, especially when other people like film stars and company bosses are paid huge sums of money that are out of proportion to the importance of the work they do. So what have you understood out of this? All in all, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ workers ਨੇ, workers are name ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? Nurses, doctors, teachers. Okay. In one word I can say professionals.
कुछ लोगों का ये कहना है कि जेडे प्रोफैशनल्स ने जिवें कि नर्सिस डॉक्टर्स ते टीचर्स इन्हां नूं जिहड़ा पे करते हैं दे आर अंडरवैल्यूड इन द सेंस ऑफ वॉट कि उन्होंने सैलरी घट मिलती रिमनरेशन घट मिलती ओके तो इन्हां दी इन्नी वैल्यू नहीं की जाती एंड इन्हां दी वैल्यू ज़्यादा करनी चाहिए है या दे शुड बी पेड मोर वाई क्योंकि दे आर अंडरपेड getting it or not let's say इन्होंने सैलरी or another word for salary is remuneration which they get is much less especially when other people like film stars ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ they are being paid least ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਲਰੀ there are many other kind of professions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ but yes in this task they have compared it with the film stars ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ film stars ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ and the bosses of some companies or some firms or and so on boss no you can also say chief executive officer CEOs company the CEO or you can say director of a company and I guess it true bhi hai it is true yes or no एक नर्स दी डॉक्टर दी टीचर दी सैलरी कैन यू कंपेयर इट विद दैट ऑफ सम फिल्म स्टार और सम सेलिब्रिटी आई विल कोट एन एग्जांपल बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है मेडांटा विच इज नेम्ड एज मेडांटा और मेदांता it is in Gurugram is another name of or the new name of Gurgaon okay ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ he is Dr. Trehan he is basically a cardiologist as per my knowledge ਹੁਣ can you compare ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ venture ਹੈ when some time back when he was posted in some hospital or was working in some hospital do you think the salary of Mr. Trehan or Dr. Trehan can be compared with that of Shah Rukh Khan? Shah Rukh Khan does not get a salary, but what he earns, what he gets out of that film. Comparison hai koi? He is getting in millions, and Dr. Trehan somewhat he might be getting in some lakhs, at the max lakhs, and that too ki jado Dr. Trehan he is one of the best and most famous doctors in India. And what about the other doctors who are working in rural backgrounds or rural areas? Talk about Punjab. Punjab ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ village ਦੀ. And some doctor is posted there in community health center CHC short form ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ. ਕਿਸੇ community health center ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ doctor posted ਹੈ do you think ਇਹ doctor ਦੀ salary ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ doctor earn ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ it is ਕਿਤੇ ਵੀ comparable ਹੈਗਾ with a celebrity? Comparable with Salman Khan? No, doesn't stand anywhere. ਤੇ ਟਾਸਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ they play an important role and they offer very important and imperative services to the society ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਨਰਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ but their salaries are not equivalent भी नहीं कह सकते they stand nowhere in front of what these celebrities and CEOs of the companies they earn ਤੇ टास्क ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है ये डॉक्टर्स नर्सेस एंड टीचर्स they are undervalued or you can say underpaid and should be paid more ਇਹਨਾਂ ਦੀ सैलरी increase करनी चाहिए है especially खास करके especially ਦਾ मतलब है खास करके when other people दूसरे लोग ने yes get it ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਬੌਸਸ ਆਰ ਪੇਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that are see this line is also important that are out of proportion to the importance of the work they do at the max celebrity ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ acting in a film or in some fashion show ramp walk or in some advertisements यही है या किसी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे एट द मैक्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट दैट वर्क इज इन फ्रंट ऑफ एन एजुकेशन कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है और द हेल्थ केयर सिस्टम दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ एनी स्टेट एनी रीजन एनी एरिया तो सैलिब्रिटी का काम है एंटरटेनिंग पीपल
ठीक है। तो कहते जेड़ा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क दे डू उन्हां दे काम दी कितनी क महत्वता है उहदे सामने जो डॉक्टर्स नर्सेस ते बाकी वर्कर्स ने या टीचर्स ने उन्हां नूं कुछ भी सैलरी नहीं मिलती। दिस इज ऑल व्हाट इज द स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? स्टेटमेंट का मतलब पता है? ओके, सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो task to this statement it gets displayed in front of you either in class or in paper, the meaning of the statement should be crystal clear in your mind. Until unless that statement is very clear to you, task attempt नहीं होएगा, it will be off topic and definitely you will be short of ideas also. Ideas भी नहीं strike करने। Okay, coming on to the question next. ਹੁਣ question examiner ने पूछा do you agree or disagree? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ given statement ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ या नहीं? Okay. Second question is what criteria should be used to decide how much people should be paid? केड़ा criteria वरतना चाहिए है ये डिसीजन लैन दे लई कि जेडे भी इंडिविजुअल्स किसी सेक्टर दे विच काम कर रहे हैं उन्हां नूं कितनी सैलरी दित्ती जाए। Have you understood the question? This is where you must invest at least 4 to 5 minutes of your writing task too. If you invest this time wisely in your task, nobody can stop you from clearing your paper. समझ आया? Okay, let's begin. So beginning with the introduction. Any general line? Prior to the introduction, we will also write some synonyms. Okay, what can you write for some people? A segment of society. Certain individuals. What else? Few masses. And so on, because you need not to know more of synonyms regarding this because introduction check very paraphrasing चाहिए use होनी चाहिए. They feel that or they find what else? Observe, opine, state, assert. Okay, that certain workers like nurses, doctors and teachers, and for this whole statement you can write few professionals. Skilled individuals या skilled workers, skilled workforce, is that okay? Okay, skilled workforce should be paid more. They acha skilled workers they are undervalued. Undervalued you can write underpaid. What else? Overlooked नहीं. Overlooked is neglected. Overlooked is synonym of neglected. A sector नु neglect नहीं किया जाता but salary cut मिलती है. So what else you can write for undervalued? They are underpaid. What else? Not paid sufficient or enough. Wait, or you can write not paid comparable to those celebrities and CEOs or directors. Okay, what else? Their salaries are quite less. Is that okay? And should be paid more. Their salaries should be increased or hiked, especially when other people like film stars and company bosses. Okay, what will you write for this? Company bosses and film stars. What will you write for film stars? People working in the world of
glamour. Is that okay? Fashion industry, acting industry, what else? In the world of entertainment, try something. Celebrities, the film, one word for film stars is the celebrities. And company bosses, what will you write for company bosses? CEOs, directors, heads, managers, what else? These are sufficient. Hanji? Owners, not employers. हाँ, employers, ठीक है. I thought employees बोला. Employers, okay, sufficient. Are paid huge sum of money. What will you write for huge sum of money? Hefty sum, big chunk of money. What else? Overpaid. They are paid extra amount that are out of proportion to the importance of the work they do. या कह सकते हो which are not, which is out of the importance. What will you write for this? Out of the proportion of the importance. If compared with the services they offer, ਜਿਹੜੀ services they offer ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੈਸ. ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਆਲ ਦ ਸਿਨੋਨਿਮਸ. Are you getting it? Have you noted down all the synonyms? Okay, that's all. Done this? Okay, now we'll begin to the main structure of the task. As everyone knows, our task begins with the introduction, and first step of the introduction is a general line. हाँ जी, बोलेंगे general line. Any general line you may try. Education and medical
medical are the backbone of a country. Education and medical, what? Medical services. Medical services. Play an important. Task is regarding the salaries and the value which we Teachers and health professionals. see. One general line example, I'll give it to you. It is an undeniable fact. Undeniable means ਜਿਹਨੂੰ deny नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता. एक चीज इतनी सच्ची है. Do not write. Just concentrate on the board, everyone. It is an undeniable fact that healthcare professionals H small I and teachers offer very imperative is a synonym of important, very imperative services to the nation, society, community, whatever you want to write, community, state or nation and so on. Is that okay? It is an undeniable fact that healthcare professionals and teachers, they offer very imperative services to the society which cannot be neglected or sidelined. सही है? Doctor एक कितनी important service in the country नो? Teacher कितनी important service in the, because these two sectors are, as he has said, are the backbone of any country or state or region or area. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਡਿਨਾਏਬਲ ਫੈਕਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲਾਈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲਾਈਨ Nation's progress depends upon the healthcare and education. That is okay. The progress of a nation develops upon its health status and literacy. How much population or citizens of those countries, what percentage of population of a particular nation is literate, the progress of the nation depends upon that. That is quite very obvious. Okay, one general line is done. Now we'll shift on to the paraphrasing, but make sure कि थोड़ी paraphrasing इतनी lengthy ना हो जाए दे विच, because introduction has to be of at the max 40 to 50 words. You have to be smart enough. ठीक है? It is paraphrasing statement ही करोगे. A section of society opines that professionals such as doctors, nurses and so on, they are underpaid simply as compared to the celebrities or the people who are working in the world of glamour. Sufficient, that is enough. Because examiner ਨੂੰ explain करता है कि doctors, nurses, teachers ਨੂੰ पैसे घट मिलते हैं किधर comparatively as compared to the celebrities. बात खत्म होगी. ठीक. Now the question is, कैसी statement आएगी? Do you agree or disagree? If you agree, you will write I agree with the given statement and my views along with the criteria used to decide the salary. सिर्फ ये पूरी स्टेटमेंट लंबी लिखोगे, इंट्रोडक्शन विल बी वेरी लेंथी. आप लिखोगे आई अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट जो भी है इधर लिखोगे आई अग्री और डिसएग्री एंड माय व्यूज विल बी क्रिटिक्ड along with the criteria which should be used to decide salary in the upcoming paragraphs. Getting it? Okay. Now we'll shift on to the points. Note down karna. If you want to note down something, you can. Yes, I hope everybody is getting this task. Everyone sitting there in Bhatso, Patiala, yes. All right. Am I audible to all? Further, if you have any query, you can note it down. And when I take your offline class tomorrow, I'll clear those doubts as well.
hurry up. Okay, done with this? Fine. Okay. Now we'll begin with our body paragraph 1. अच्छा, body paragraph 1 and body paragraph 2, finally conclusion. ठीक है. Body paragraph 1 च की लिखोगे? What will be the content of your body paragraph 1? Structure, task 2 the introduction, body paragraph 1, 2 and conclusion. ठीक है. Body paragraph 1 ਦਾ content ਕੀ ਸੋਚਿਆ? Have you decided your agreement and disagreement? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ nurses, teachers and doctors ਦੀ salary ਵਾਕਈ celebrities ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? As I have told you, a doctor working in the community health center of a village does not earn equivalent to that of celebrity, be it Shah Rukh Khan, Salman Khan, Akshay and so on. ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ earning ਹੈਗੀ ਹੈ? नहीं है. So question the answer, I बोल देनी? Yes, I agree with the given statement. Okay, now what will be the content of your body paragraph 1? तुसी justify करना है कि वाकई या ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ remuneration ਹੈ ਉਹ celebrity से comparatively ਘੱਟ ਹੈ. Okay. Body paragraph 1 to commence with, will begin our paragraph with this. Okay. ਹੁਣ next line, opening line ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ body paragraph 1 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ what is gonna be your content of body paragraph 1. Body paragraph 1 ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? Tell me. Contribution of this work was the Task is not about the contribution. See, the keyword is the salary. ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ pay ਦਾ ਹੈ. Don't talk about the contribution. That's why I told you कि statement ਨੂੰ properly understand करके make one box and write those points in that box regarding your agreement or disagreement. ਤਾਂ आप agree कर गए हो कि nurses, doctors ਤੇ teachers ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ celebrities ਦੇ comparatively ਕਿਤੇ ਵੀ stand ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. Do you think if some celebrity is earning 4 crores by doing some acting in some movie, maybe that film gets telecasted in या पूरे 1 साल लग गया मूवी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, and a doctor can earn hardly I guess 5 to 6 lakhs if he is a government employee. नहीं ना? Okay. Now we'll justify या points the reasons दवांगे, explain करांगे examiner ਨੂੰ कि जे workers ਨੂੰ, nurses ਨੂੰ salary cut मिलती है तो क्यों? Celebrities if they are getting huge sum of money या if they are salaried more या if they are getting more out of their profession, why it is so. So I'll begin this paragraph with a line to commence with. There are many, or you can write the word multiple. There are multiple factors which decide what a person, बहुत सारे फैक्टर ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ profession ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ. Okay, let me explain you. I know you are not getting it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. Film, media, dramas, shows, fashion shows लोग क्यों देखते हैं? To entertain themselves. That is to get away from their frustrated daily routine. एक तो frustration तो दूर होने लिए. Is that okay? Secondly, yes, definitely for recreation purpose. Is that okay? As well as to spend some quality time with their near and dear ones. Yes or no? ठीक है. लोग मूवीज देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, मीडिया देखते हैं to entertain themselves, to get away from their frustrated daily routine, and of course recreation and quality time is almost one and the same thing. Now we have to justify कि celebrities ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਆ.
मैं फर्स्ट लाइन जी ओपनिंग लाइन थोड़ा दस रही सी वो मैं इस पैराग्राफ के कंटेंट की लाइन दस रही सी, एक स्टार्टिंग लाइन दस रही सी कि तुहाडे पैराग्राफ का कंटेंट की होएगा। मैं ये दस्या ऊपर स्टार्टिंग दे विच टू कमेंस विद मतलब टू बिगिन विद या टू स्टार्ट विद बहुत सारे फैक्टर्स है जिहड़े डिसाइड करते हैं किन्ने बंदे नूं किन्नी सैलरी मिलती है। इट्स नॉट ओनली वन फैक्टर दैट इज देखो सानू देखने च लगता है कि जिहड़ी नर्स या डॉक्टर या टीचर है इन्हां दी सैलरी जिवें मैं तुहानूं एग्जांपल दी है डॉक्टर हु इज एम्प्लॉयड इन सम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन अ विलेज उसकी सैलरी बहुत घट है। व्हाट दी सेलिब्रिटीज आर अर्निंग यही टास्क है ना, क्वेश्चन यही है। सानू ये लगता है कि दे आर स्किल्ड प्रोफेशनल्स और दे आर मच मोर क्वालिफाइड एज कंपेयर टू व्हाट दीज सेलिब्रिटीज आर। I remember in one of the interviews which I was listening to, मैनू किते ये इंटरव्यू च मैं सुनिया सी करिश्मा कपूर who is a very famous celebrity, she is only 6th pass. After that she dropped out from the school. And compare a doctor who completes after completion of 10th standard only and only if he or she gets in admission in some medical college. Once after getting into medical college फिर 5 years दी डिग्री है, 5 years 6 year or whatever it is। उस तो बाद post graduation if somebody has done, then again investing another 3 years of life and just look at the educational background। ये comparatively हम लगता है ना कि सैलरी बहुत इन्होंने घट मिलती है, but yes मैंने आपको यहाँ पे ये बोला है कि there are multiple factors which decide the salary of a person, it is not exclusively the qualification। तो ये पॉइंट अपन जस्टिफाई करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ने। सो इथे फैक्टर फर्स्ट फैक्टर केड़ा नजर आया? नो नॉट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली तो सैलरी मिली नहीं। इट इज द डिमांड ऑफ द पब्लिक। पब्लिक वांट्स टू वॉच फिल्म, दे वांट टू वॉच मीडिया, दे वांट टू वॉच ड्रामास टू गेट आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड डेली रूटीन। They want to recreate themselves, they want to spend quality time with the near and dear ones or siblings or parents। So इस करके इस celebrities इन्ने ज़्यादा demand हैं कि they are getting whatever or huge sum of money। And this entertainment industry is very profitable। Profitable क्यों है? क्योंकि it is much more in demand। Entire population of India, no matter what do they earn every day, भावें वो कोई डेली लेबरर है तो ਉਹਦੇ wages मिलते हैं उन्होंने, या कोई पर्सन सैलरीड है whether in the public sector or in the private sector, कोई पॉलिटिशियन है, whatever the profession is, या एजुकेशन सेक्टर है, whosoever is living in India, मैनू लगता नहीं कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ पर्सन होएगा ਜਿਹੜਾ कहेगा I don't like to watch a film or a movie or a drama। If not this, तो एटलीस्ट किसी ना किसी एंटरटेनमेंट सोर्स उन्होंने इंटरेस्ट जरूर है। जिन्हों का नहीं है दैट इज वेरी मीगर पॉपुलेशन आई सपोज, उन्होंने परसेंटेज ना नेगलिजेंट मतलब नेगलिजिबल होती है, उन्होंने कैलकुलेट भी नहीं करने की जरूरत। बट मेजोरिटी 99% आउट ऑफ 100 दे वांट टू एंटरटेन देमसेल्व्स। तो जो एंटरटेन उन्होंने अपने आप को करना है, दी सेलिब्रिटीज आर इन डिमांड। तो एक फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि इट डिपेंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि हाउ मच अ पर्सन इज गोना बी पेड या हाउ मच ही और शी इज गेटिंग। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। द फिल्म स्टार्स ने जेडे दे आर इन अ ह्यूज या लार्ज डिमांड, क्योंकि हर कोई पर्सन अपनी डेली रूटीन तो दूर जाना चाहता है, या जो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने होंदी है तो अपने आप को रिक्रिएशन दे वल लैके जाता है। दे गो टू वॉच दी सिनेमा मूवी एंड सो ऑन वट एवर जो भी टीवी ते टेलीकास्ट किया जाता है। That is why, so this is one reason why these celebrities are earning much more than the other professionals, not only doctors, teachers also, nurses also and other healthcare workers बहुत होंगे हैं। मतलब थोड़े जे प्रोफेशनल्स जिन्होंने नाम देता, अदरवाइज देर आर मैनी प्रोफेशनल्स जिन्हों की सैलरी इन्होंने सामने कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझ आया? यस or no? Yes ma'am। Okay। Do you want to note down anything from this? करना है तो कर लो। मैं लाइन कंप्लीट कर देनी है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन द इकोनॉमी
which decide the salary or remuneration of the individuals, or you can write professionals. Choice is yours. I hope this statement is clear to you. सबनु समझ आई स्टेटमेंट? और फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट पॉइंट समझ आया? ठीक. Understanding of the statement of the task is much more important if you compare it with the writing of the points, because you can only write down the points if the statement of the task is clear to you. I hope statement ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਈ. इंट्रोडक्शन कितना लिखनी सी समझ आई. इट शुड बी वेरी क्लियर ताई राइटिंग अटेम्प्ट होएगी. ओके एंड स्टार्टिंग लाइन यदि समझ आई कि ਆਪਾਂ बॉडी पैराग्राफ ਦਾ कंटेंट बनाना समझ आया. एंड व्हाट डू यू थिंक बॉडी पैराग्राफ 2 ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? क्राइटेरिया कि ਕਿਹੜਾ क्राइटेरिया यूज करना चाहिए सैलरी डिसाइड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ओके बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डू राइट वन और मोर 2 मोर पॉइंट्स. आई विल टेल यू 2 पॉइंट्स लिखने होंगे. यू कैन राइट 2. इफ यू वांट 3 तो यू कैन राइट 3. ਕਿਹੜਾ? हाँ विल राइट. ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਪੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਆਫ ਗਲੈਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. Done with this? Yes. Okay. Now, second one is CEOs of a company or a firm, industry, whatever, boss of a company, head of a company. See, जो कंपनी है ਉਹਦੀ सक्सेस या failure depends upon the manager or the head. Yes or no? Yes. Depend करता है कि नहीं करता? अगर CEO दी या boss दी administration is not good, company is gonna shut down. That is quite obvious. Okay. कहना कि कंपनी का जो सक्सेस या फेलियर है it depends upon the administrative. It depends on the administrative skills of the head. Is that okay? Hence, the heads of the company, they are under a lot of burden, or you can say they are under huge stress or tension if it is compared with the other employees. I'll elaborate it more. Let us say some person named A is a director of some hospital. The reputation, the successful running of the hospital depends upon this A. If these employees, nurses, employees और केड़े हो सकते doctors, employees, other technicians,
and so on, other healthcare workers. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, who has to look after their work? Some head of the hospital, and if the administrative skills of this person are not so good, this hospital is gonna shut down in coming few years. Person A ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ burden ਹੈ as compared to A, B, C, who are these employees? एक डॉक्टर ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ? Because this person is controlling the entire staff of the hospital and of course many other things which these doctors, nurses and healthcare workers, they do not know. Yes or no? Okay. Hence ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ it is justified? कैसे? मतलब पैकेज भी कहना कि अंडरपेड नहीं हो, पर अब इतने मतलब उन्होंने प्रूव करने कि वो सही सैलरी मिलती है जो। हाँ तो सही वो नहीं, क्यों एग्री के हिसाब से तो चल रहे हैं. डॉक्टर की सैलरी कम है ना, नर्स की सैलरी कम है ना, टीचर की सैलरी कम है ना, तो बॉस की सैलरी ज्यादा है. ज्यादा क्यों है मैंने जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि बॉस नो उस कंपनी दा सक्सेस या फेलियर दा पूरा बर्डन एंड responsibility ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ. He would be responsible if the company, if the graph of the companies goes down, if that company does not run successfully. अगर ਉਹਦਾ declining graph आ गया, it is the administrator who is responsible. Hence ਇਹਦੀ salary, if it is much more than that of the doctor, nurse and the teacher, it is justified. ऑफ टॉपिक खुद ही आपको लगने लग गया ना कि हम ऑफ टॉपिक चले गए. सी द कंफ्यूजन विच इज यू आर मेकिंग इन योर माइंड्स. अजय तो मैं टास्क स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की है. एंड दीज आर द मिस्टेक्स विच कैंडिडेट्स यूजुअली कमिट इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो राइटिंग ऑफ टॉपिक जाके सारा टास्क खत्म, हाथ हो गया. हाँ जी, हाँ जी. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ क्या है, एक कंपनी चलाता है. सेलिब्रिटी क्या करता है? प्रपोर्शन ऑफ द वर्क दे डू इज कि ਜਿਹੜਾ एक सेलिब्रिटी है कितना देर एक मूवी बनाने ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. बट आई टोल्ड यू, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 40 lakhs and 4 crores ਜਾਂ 4 to 5 lakhs ਜਾਂ 4 crores. ਉਹਨੇ 6 months ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 7 months ਕੰਮ ਕੀਤਾ, and that too alternatively, not very regularly. हर एक्टर रोज ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ है ना. अगर करता भी है 2-3 दिन शूटिंग करके, then again there is a stop, again there is a pause, again there is rest. But doctor regularly 9 to 5 into 365 days he is going to the hospital. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ proportion of work ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ as compared to what these doctors and nurses are getting. समझ आया? If you understand this task properly, you can cover number of other tasks with this. यार BP1 में ये नहीं समझाया, आप एग्री कर गए हो तो मैंने आपको बता दिया कि these are the points which you can write in support of your agreement. आप डिसएग्री करते तो मैं डिसएग्रीमेंट का बता देती. पर ये है, ये चाहेगा ये एग्रीमेंट. डॉक्टर दी सैलरी या टीचर दी सैलरी, कैन यू कंपेयर इट विद दैट ऑफ आई टोल्ड यू शाहरुख खान जो उन्होंने एक मूवी जो मिलता. देन थम्स अप की एड देता है सलमान खान. यू कैनॉट इवन इमेजिन व्हाट ही इज गेटिंग आउट ऑफ इट. और टीचर की कमा रहे हैं. इफ अ टीचर इज गेटिंग 40,000 पर मंथ तो साल का कितना बना? 4,80,000. कैन यू कंपेयर इट? 10-15 minutes more. Is that okay? समझ में आया सारा? आप अपनी ही बात को कंफ्यूज कर गए. सबसे पहले जब टास्क को अंडरस्टैंड किया, उसका मीनिंग समझा, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट डिसाइड करके राइट द पॉइंट्स इन दिस रफ बॉक्स साइड पे बना के कि यस इफ आई हैव अग्रीड कि हाँ अग्रीमेंट क्या है, फिर सोचना है कि नर्सिस दी सैलरी घट है एज कंपेयर टू दैम. हाँ मैं इस गल नाल सहमत हाँ, वो पॉइंट्स असीं जस्टिफाई कीते है कि क्यों वो घट है. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. इज दिस क्लियर? सेकंड पॉइंट ठीक है. एक और पॉइंट करा देनी है. चॉइस इज योर्स इफ यू वांट टू जॉट इट डाउन इन योर टास्क. डू यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग आउट ऑफ इट? करो.
Yes, candidates of mind trainer, are they getting me? I hope this is an interesting class for you guys. See you tomorrow in an offline class. पॉइंट समझ में आया सारे? इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी इन योर माइंड यू कैन आस्क मी. कोई पॉइंट एक कॉन्ट्राडिक्शन कोई पॉइंट दिमाग च आ रहा है, यू कैन आस्क मी दैट. ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे तब बताओ. हो गया इनका क्लास? ठीक. Okay, now we'll shift on to third point. Again, की justify करना है ऐसे कि celebrities की salary ज़्यादा है. Third point is, people working in the world of glamour their future is very uncertain. Another future जेड़ा बड़ा uncertain है. And their career is also short-lived. If a celebrity who becomes very old, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ movies ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ? No, because fresh candidates या fresh people, they keep coming into this world and they are liked by the people. Okay. Can their future is very uncertain and their career is very short-lived. Hence, the money which they earn has to be spared or it has to be saved for future years of their life. Whereas the professionals, they get their regular salary. Is that okay? The professionals, they get their regular salary, but the people working in the world of glamour, their future is not very certain. Their future is rather short-lived. So whatever they earn, it has to be saved for the future years. और आने वाले समय लिए वो पैसा बचा के रखना पड़ेगा. इस करके if they are earning more, you never know in the coming future या in the coming years whether they are gonna get some movie या कोई advertisement के लिए point करेगा या नहीं करेगा. Hence, जेडे पैसे है जो उन्होंने ज़्यादा भी मिलते हैं, they get it for a shorter time as compared to the professionals. Is that okay? Okay. Fine. Now last note on this if you want to. BP2 करेंगे जिधर criteria used to decide the salary will do.
Okay, now your body paragraph 2 starts. Now you tell me your ideas. Ki what should be the criteria to decide the wages or the salary, what it should be. I'll begin with the line. It is very complex to decide the salary or wages according to the profession, according to the work which a person does. Salary या remuneration या wages decide करने बड़े मुश्किल है. So what should be the criteria? According to me, salary should be decided according to the number of years required to become qualified. I'll quote an example. लिखो नहीं, सिर्फ ये बोर्ड पे देखेंगे. Doctor takes it takes almost 10 years for a person to become some specialist or some you can say specialistic. It takes almost 10 years to become a doctor or a specialist in some stream. Skin the doctor लगा लो, eye the doctor लगा लो, surgeon लगा लो कोई, and so on. And almost 3 to 4 years to become a teacher. Henceforth, salary should be decided according to the number of years required to become qualified. अगर किसी profession दे विच 10 to 15 years लगदे हैं, तो the salary proportionately it should be higher than 3 or 4 years जे किसी course च लगदे हैं. Yes or no? और क्या criteria होना चाहिए? और की क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज तो क्राइटेरिया के अगेंस्ट है. एक एक्टर नालों डॉक्टर के पैसे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जेडी उनकी सर्विसेज है दे आर मोर इंपॉर्टेंट. एक गड़बड़ इस टास्क में ये किया है, ब्लंडर किया है, यू आर राइट. इसको डिसएग्रीमेंट करके सारा टास्क बिल्ड करना. आपने स्टेटमेंट लिखना आई डिसएग्री. क्यों? क्योंकि उसने ये भी बोला ना कि वर्कर्स लाइक नर्सेज एंड डॉक्टर्स दे आर अंडरवैल्यूड एंड अंडरपेड एंड दे शुड बी पेड मोर. इनको पेड ज्यादा देनी चाहिए. पर आप डिसएग्री करोगे कि हम इस बात से सहमत नहीं है कि इनको पेड ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन कि एडमिनिस्ट्रेटर है जेड़ा और टेंशन कितनी ज्यादा है, तो उन्होंने पैसे ज्यादा मिलने चाहिए. जेडे सेलिब्रिटीज ने ये डिमांड इन्हों की बहुत ज्यादा है, तो डिमांड के अकॉर्डिंगली इन्होंने पैसे मिलते हैं तो मिलने चाहिए. सो एक छोटी सी मिस्टेक यही थी कि इंट्रोडक्शन में एग्रीमेंट की जगह डिसएग्रीमेंट करो. इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस टास्क ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, नेक्स्ट टॉपिक 24 करा देंगे. उसमें फिर देना पड़ेगा कि यस द सर्विसेज व्हिच डॉक्टर्स, नर्सेज एंड टीचर्स ऑफर टू द कम्युनिटी आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन द रिक्रिएशन. और सर्विसेज नो साइडलाइन या निगलेक्ट नहीं किया जा सकता. फिर उसके अकॉर्डिंगली बनावांगे सारा. सो दिस इज डिसएग्रीमेंट के रिलेटेड. अच्छा, और क्राइटेरिया की होना चाहिए. Salary should be based on the experience. Salary should be based on the what? Importance of the service. Importance of the service which the individual offers. Let's say I am giving you a class of writing task 2 in IELTS. There is one more module listening, another module is reading, one more is speaking. Everyone knows writing task 2
is comparatively difficult if it is compared with listening. And of course you find it more important because ਇਹਦੇ ਚ ideas वगैरह generate करने ਹੋਰ बहुत चीज़ां चाहिए and manual checking भी चाहिए teacher दी. Listening is what you listen and आंसर शीट तो देख के या ऑनलाइन यू कैन लुक फॉर द आंसर्स तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਰੈक्ट कर ਲੈਣੇ. सो द सर्विस व्हिच आई एम ऑफरिंग द राइटिंग टास्क 2 वाले टीचर तो ज्यादा होनी चाहिए या घट लिसनिंग वाले दी घट नॉट गेटिंग क्राइटेरिया नहीं समझ आए कि सैलरी ये आपके पॉइंट्स है हम प्रॉब्लम केड़ी सॉल्व करदा पे केड़ा पर्सन ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग नहीं चाहिए. यस मैंने क्या बोला है इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस व्हिच द इंडिविजुअल्स ऑफर. एक डॉक्टर एक पेशेंट की जान बचा रहा है सेलिब्रिटी डांस करके एंटरटेन कर रहा है विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेविंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट. सैलरी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली डिसाइड करो. इज दैट ओके. अच्छा ऊपर कितने इयर्स ਉਹਨੇ स्टडी च इन्वेस्ट किए हैं सैलरी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली डिसाइड होनी चाहिए. उस पर्सन ਨੂੰ एक्सपीरियंस कितना है. लेट्स से एक बड़ा फ्रेश कैंडिडेट या यंग कैंडिडेट एक कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ जॉब ਲਈ अपॉइंट हो गया and there is another candidate working who is 10 years who is holding an experience of 10 years. salary no doubt ਇਹਦੇ skills ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੇ skills ਘੱਟ ਹੋਣ but ਇਹਨੂੰ experience ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ experience based salary ਹੋਣੀ चाहिए. choice is yours. criteria ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ 3 criteria I have told you. ਤੁਸੀਂ एक्स्ट्रा कोई देना चाहते हो या इना तो अलावा if you want to replace any of your point with these 3 you can. मेरिट लिस्ट कर सकते हैं. मेरिट लिस्ट वही है उसमें एक्सपीरियंस भी है या आपके मार्क्स हैं. हाँ वो मेरिट लिस्ट मोस्टली ਜਿਹੜੇ एग्जाम्स ਆਪਾਂ कंडक्ट करते हैं या जिवें किसी कोर्स एडमिशन लेना मेरिट लिस्ट ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ है ना क्योंकि मेरिट लिस्ट डिसाइड्स वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट है ना. तो सैलरी जी है तुहानू तनख्वाह कितनी मिलेगी ਉਹਦਾ क्राइटेरिया की है. आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सैलरी शुड बी सैलरी या थोड़ी इनकम कह सकते हो योर इनकम और योर what you earn out of your profession it should depend upon the service you offer. Best example I have given you. listening वाला टीचर ज़्यादा skilled होएगा या थोड़ा task 2 वाला होएगा. Anybody who has done IELTS, even if he or she has got 5.5 bands or 6 band score or 7, I guess he or she can take your listening class because he or she has just to supervise you. ते थोड़ी marking बस board ते answers लिख देने and you have to correct on your own. और ते teacher दे skills and बहुत ज़्यादा efforts की ज़रूरत नहीं है. Task 2 वाले teacher has to stand for at least 60 to 65 minutes. बोर्ड पे खड़ा है and then manual checking of the task is there. Grammatically सारा task उन्हें check करना है. Ideas generate करके देने हैं. Same is the case with this. Saving the life of the patient is much more important. There, इन्हों disagreement लिखना तो thesis statement ਦੇ ਵਿੱਚ I disagree because ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ task build ਇਹ ਕੀਤਾ है कि justify ਕੀਤਾ है कि celebrities ਨੂੰ ਜੇ पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं. Again I repeat. First is they are in more demand. Second, administrator या head of the company या ਜਿਹੜਾ boss है he is under lot of burden and pressure as compared to employees. Okay. Third point, their future is very uncertain. ठीक है. तो इस करके इन्होंने ਜਿਹੜਾ पैसा है जो ज़्यादा मिलता है तो that is justified. Criteria, what should be the criteria? ओ दस देता है कि criteria generally A होना चाहिए. Clear to all? Everyone? Any doubt anyone is having? कोई doubt है? Simran, clear? Yes. Okay. Okay. That's all for today. We'll have a next class on Monday. इसको बंद कर दो. बंद कर दो. Conclusion you will do? Conclude कर लोगे? Conclude कर लोगे? लिखना आपने खुद conclusion. I'll see क्या लिखते. Okay. Okay. Bye. People sitting there in Bhatsho.